Hello friends, welcome to my channel Civil Engineering Notes, Changing the Way of Learning। स्वागत है आप सबका। अब हम बात करने जा रहे हैं एसएससी जेई सिविल इंजीनियरिंग प्रीवियस पेपर 2010 साल का पार्ट 1 लेके। यहाँ पे मैं 2010 साल का सिविल इंजीनियरिंग पेपर जो एसएससी जूनियर इंजीनियर में पूछे गया उसी के लिए डिस्कशन करूँगा। तो चलिए अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, द फ्लो इन ओपन चैनल। द फ्लो, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हुआ, आई हुआ ए एल होगा, फ्लो। द फ्लो इन ओपन चैनल इज turbulent if the Reynolds number is more than 2000. Question number 2, the pitot, P-I-T-T-O-T, pitot tube is used to measure velocity at stagnation point. Correct answer, velocity at stagnation point. Question number 3, the maximum permissible limit for fluoride in drinking water is 1.5 milligram per liter. Question number 4, the shearing strength of a cohesionless soil depends on dry density, rate of loading, confining pressure. Question number 5, dry rot is reduced the strength of timber. यहाँ पे ओनली आंसर डिस्कशन करा हुआ। Resins are used in varnishes. Question number 7, for a tachometer, the additive constant and multiplying constants are 0 and 100. Additive constant of a tachometer 0, multiplying constant 100. Question number 8, the relation between coefficient of consolidation CV, time factor CT, drainage path D, time T, given by CV equal to D square TV upon T, a D square. Question number 9, age of tree may ascertained by number of annular rings. Question number 10, मतलब आज का लास्ट क्वेश्चन, the main ingredients of Portland cements are lime and silica. So guys, this is much for today. अगर आप हमारा चैनल पे नया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।